Mahindra Bajaj ji? On the way, अच्छा अच्छा. Ranjit Kumar Wala ji? MNL Technology Limited LLP. MNL Technology? 10 मिनट. दीपक वारनानिया जी? हाँ नमस्कार सर. आकाश अग्रवाल जी? आशीष हसमुखलाल जावेद जी? कोई नहीं. अशोक चिरवाल जी तो आगे हैं. शिव कुमार गोगिया जी? आएंगे. वीरेंद्र पावर जी? नमस्कार सर. मनोज अग्रवाल जी? नहीं. शरद जैन जी? ओके ओके. अनिल सिंह सांघवी जी? नहीं. ओके सॉरी. संतोष प्रजापति जी? नमस्कार सर. डॉक्टर भूपेश दी शाह? डॉक्टर शाह? नहीं आएंगे. अच्छा नहीं आएंगे. ये आएंगे सर. Now we shall continue with the panel discussion on medical scientific aspects, difficulties in patient treatment and medicine availability scenario. I would like to call upon Dr. Prasanna Shirol on stage. Dr. Jayesh Sheth, Dr. Parva Purohit, and Dr. Ganesh Sangle, and Dr. Ashwin Dalal. I hand over to Dr. Parva. Thank you, the Honorable Guest, for the panel discussion to begin. Good afternoon, everyone. So we'll continue with the scientific session. Today we have a very strong panel with respect to we have a developer, we have public voice, as well as we have diagnostic, we have the center of excellence with respect to connect with the patient. So let me begin the question with respect to the development part first. So I will redirect my question to Dr. Parva Purohit with respect to your his vision. I hope it is audible. Okay, so my first question goes to Dr. Parva Purohit with respect to sharing his vision with development and the kind of indications in rare disease. And I will request Dr. Parva Purohit to share his vision. Thank you. So, the vision of Shivanka Research is to create new drug entities. Also, the available drug or the known drug or approved drug that can be repurposed into several other diseases which can cure the rare diseases including. So we have a bunch of scientists, around 35 scientists in Shivanka Research. They have, so they are all young. Our average age is around 35. So, and I really would like to congratulate all of them for their contribution in the pharmaceutical research. So we have a good molecular biologist, we have pharmacologist in our team, we have medicinal chemist in our team, and we have people from pharmaceutics, business development, and analytical side. So all these people are creating all their endeavors towards creating the new drug research. Now, in India, if we see the research towards bringing new drugs is very rare in itself because of the cost
of performing research in the field of pharmaceutical science. And as Chirag Bhai also stated that the cost can be up to 230 million to sometime 2.3 billion US dollar, which is keeping the drug research a costly affair. And also, we believe that there are still chances of failure, and all this perspective, which is causing drug to become I mean, it's a costly research, so the drugs also become costly. So, so far till date, in last 5 decades, I would say, of pharmaceutical research in India, the field has performed generic research, I would say. We have been copier in one way, I would say. So our endeavors is to bring differences in the aspect of performing research, and so in Sri Lanka we are performing research on breast cancer. So we have 2 candidates that is in the area of breast cancer, specifically SOR, and one of the candidate is first in class. We have the research being performed in the area of interstitial cystitis, which itself is a rare disease, and virtually there is no drug at present today. And we have one candidate that is for which we are about to file IND by the third quarter of 2024. We are also committed to perform our research in the area of Parkinsonism because that hits very badly to the elderly population, and patient compliance is a unmet need in that particular area. Also, in various pharmaceutical remedy which is affecting or impacting rare disease, like Gaucher, we are showing our commitment. We have filed one application to DCGI at this moment, where we are modulating the kinetics, pharmacokinetics of the drug to not only become a cost-effective but a better solution for the patient. We also will have to consider in the area of pharmaceutical research, considering rare diseases, the drug discovery is pertaining in that particular field comprises very less patient population, and at some point of time the Indian patient population have also not been considered. So the differences in the genetic mutation of that particular disease in India, we need to study that properly. Somebody will have to put their endeavors into that direction to bring the better and effective remedy for the patient is an unmet need. So this is what all Sri Lanka research is bringing up on the platform. I suppose I have answered the question. Thank you, Dr. Purohit. And my next question goes to Dr. Seth. So, sir, while we are speaking about Make in India for rare disease, where the diagnostics stand, shall we also say Make in India a diagnostic which is affordable with respect to precision? What is the kind of unconnected kind of a dots in the diagnostic that to be addressed? What do you say? That's very important. As far as the diagnosis is concerned, yes, we are able to make all diagnosis of rare disease in India. There is no dearth of the centers. But the instruments what we are depending on, like sequencing machines, those NGS machines, all have to be important. They are not made in India. So I think a few days back only I was just talking to someone, the IIT person, Dr. Ganesh.
Say why the IIT should take up the, because they're good IIT when we stop. They should take up the challenge to make the sequencing machines at least to make it affordable. Many reagents also, I think, will be costing 100 rupees and we are paying $100 for that. So this is very important challenge. Also, I think apart from the drug development, we also should look at this, how to make in India for the instrumentation. Diagnosis is possible. Even there are now in India, we do make the affordable diagnostic in a new development technology. We have just, I think, submitted one patent also for the storage disorders with the Indian patent to make the diagnosis more affordable, that you don't require very simple, but still instrumentation will be important. So that we cannot say fully make it, but the technology will be the Indian technology, what we have submitting. The more challenge again is for the small part, what we think is the manpower also. That I think in the Make in India, under the Make in India, the Gujarat government has taken the first time, because I think Karnataka and Gujarat, to take the technology, the main training, like it's called as the Phoenix School project of the Gujarat State Biotechnology, completed under biotech policy, first biotech policy, completed 5 years to train 30 students, or 30 students or the 30 technologies to the advanced techniques, so they can get an employment as a part of employment. So that I think is already completed now, completed and they have listened to that under the biotech policy. And with the second new biotech policy, the government of Gujarat, there's more focus with the drug development. But I think they have stopped that. But still, one part is still going on under that technology to how to make the youth to understand this complex technology and involved in the employment generation to understanding to the training programs. So this is very important part. I think still we have to look at this, how we can make indigenous machines. I think Ashwin perhaps also can tell something more on that. Sure. So thank you, Dr. Said, and probably yes, the next question going to Dr. Ashwin. As a center of excellence, you're handling multiple patients, and there are different kind of therapies which you see from years. They are growing. The number of diseases are also newly identified, and they are also increased. How do you see with respect to the kind of therapy support patients need, and what are the kind of difficulties as a center of excellence is facing at present? Over to you, sir. Yeah, so first of all, thank you for inviting. It's a varied kind of people coming together. That is really nice, this dialogue happening between different areas of people, and really concerted effort is needed for something like a rare disease, because they have earlier been called as orphan diseases or orphan drugs, because nobody was looking at neither the doctors nor the pharma. And like if you talk about the early 2000s when we started working in these rare disorders, very few diagnoses were available in India. We used to send samples abroad for testing, and most of the rare diseases at that time had no therapeutic. So in a way, for doctors it was good, not for the patient, but we could tell there is no therapy, and after some time the patient would also accept that there is no therapy and leave it. But with time, we are very happy that it has progressed so nicely that now not a single sample we need to send abroad. The diagnostics is fully available here. Although what Dr. Jayesh said still we have to import the kits, but at least we are able to do it here. So no patient is told that there is a problem with diagnosis. So from diagnosis point of view, once we have a diagnosis, we do prenatal diagnosis, we can prevent birth of another child with the same disease in the family. So that is fully achievable, and that we are doing routinely, and that takes care of a lot of recurrent patients with rare diseases being born in the family. So from diagnosis point of view, we are quite comfortable now, and the prices also have come down so much that most of the patients are able to afford the diagnostics. However, from therapy point of view, as slowly therapies started coming up,
in a way it was good that therapy was available, but from the patient point of view and doctor point of view, it became really difficult because now we had to tell them therapy is available, but you can't afford it. And that is much more difficult for people to accept. No therapy is acceptable over the time, but something is there, but just because I don't have the money, I cannot get it. That is really, really depressing it becomes sometimes. And that is why it is really important now that just like how it happened in diagnostics, our pharma companies step in to make these things in India. And I was really happy when I got an invitation from you. We never thought of this kind of meeting happening, and Make in India, we had heard for many other things, for machines and all that, but really now for rare diseases, for therapies also, it really has to happen. And recently, as Mr. Prasanna told, we had a meeting with Niti Aayog, and 4 drugs already have been made in India, and we could see that 60 to 100 times the cost is dropping. And now with the support of 50 lakh under the rare disease policy, all these drugs now become easily, we can provide it to the patient. And we have almost 75 patients now in our COE who are getting these therapies just because they are made in India. These are mainly the special foods which are deficient in certain amino acids. These same things, if we had to import, they would have gone beyond that 50 lakh limit, and then again the same thing comes, it is available but not affordable. So I hope more and more pharma companies come together and have this dialogue, at least start this dialogue of what is needed, what is important, which diseases are more common, which are the low hanging fruits which we can tap into, and work towards developing these therapies. So thank you. Thank you, Dr. Ashwin. So the next question is pertaining with the patient connect, hearing their voice, hearing their problems, understanding their pain. So as a ORDI, Prasanna ji, how do you see from the vision of ORDI, we are helping them in what kind of support that you need from different functions to make it happen? Thank you. Our vision is to make the rare disease patient's life better. When I say better, even is from 0 to 1, add value addition. Even if you are able to connect from a good doctor, good diagnostic, I think that is a value addition. Because they require varied solution. We may not be able to solve everything, but we are able to network them, connect with the right resources. And our position is like, we are in a bit of sea in a small boat. We don't know where we are going, what are we doing, how are we going to achieve, what happens, in bit of thing. So that is a long journey. Even a single solution makes us happy, because when we want 100 things, we cannot prioritize. Whatever comes to us, whatever takes us, makes us happy. Now coming back to Make India, I think we have discussed about how it can add value. I would like to talk about 2 products. One is the BiPAP machine. BiPAP machine is actually used for a sleep apnea. I think worldwide they use it. We started buying in India the imported one from 2.5 lakh. Now we get it at 25,000 Chinese. So when you are getting at 25,000, still there is an import duty, distributor. Imagine what is the cost China may be selling to the person here. And why are we not able to make it? And it is not a great technology. It is just pushing the air inside the body and regulating it. If I am breathing 60 times, if I am missing 10 times, we should compensate. Then the second one is, all of them are without battery backup. So even if I give it to some patient at a rural village, we know electrification. 8 hours, 10 hours, whole night there is no electricity. And if it rains even in Bangalore, when the tree falls in a particular area, even where I am staying in a big area, 8 hours, 10 hours, battery backup is not there. Then what happens to the patient? How can a mother, single mother, father handles it? Why are you not able even to provide a battery backup to that, which is available in India? Then there is a suction machine, who are on tracheostomy tube. It is manufactured in India, but 100% export to it. Same product which is manufactured in Noida, I have to import it from America at 25,000 rupees. If that portable suction machine is available, even the parents I can take my children anywhere.
with a small machine. Otherwise, they get stuck in the house entire life. I think these small changes, they are not very technology. Even if you think a normal as IIT's engineering student can develop, but I think the focus is not there. As Dr. Ashwin Dalal said, even when you invited me, I asked actually, asked for a special meeting to understand what is this pity. Because it's the first time that somebody else is looking at us. All these days is only doctors and hospitals throughout 20 years. So when I say trade association, I was really happy. I think definitely the exposure, more awareness can bring solution. We have to just look around. Solution is here. We don't require great technology to produce a drug, but non-related, non-medicinal, not medical. There are so many things which can make life easier. And it is not just for rare disease patient. It is for all old age require sleep apnea. And another one small product I tell you. It is just a suction catheter, piece of plastic tube. Okay, our own company manufactures. It is MRP 65 rupees. And some person, child who is on ventilator, they use it for a daily 10 or 15 catheter. Can you imagine the cost? So I think, and again, it is not just the cost. I can get it from a distributor at 9 rupees because I started looking at how to reduce my cost. That means there is also a margin. We need to re-engineering the tax structure. We talked about GST, how the hospital purchases, the awareness about that. It is not technology. It's again a non-commercial, commercial thing which government can work. All of us, or trades association can work. Because we cannot take these small issues to the policy maker. But trade association, like today I saw many of these, like automobile, again, which strikes me. We have a lot of requirement from the automobile industry, making small changes in the buses and other things, which can make really inclusive. I think those things can make life better and easier. Thank you. Thank you, Prasannaji. And that's the purpose today, that we are meeting all together from different streams and different trades can help each other. So with this learning, we have learning from the patients with respect to the kind of unmet need. We have Center of Excellence also saying with respect to what different therapies are changed across the time. We also hear about the diagnosis. Now, it's like a developer's kind of input. So my next question goes to Dr. Ganesh. So Dr. Ganesh, with respect to the affordability, with respect to the kind of, the patient's unmet need, how do you see, taking example of Gaucher's disease, would be the kind of a discoveries and development from your angle? Thank you, Dr. Uday, and thank you all panelists for great feedback, suggestions which scientists can implement in their day-to-day research. So just coming back to Mr. Prasanna's feedback, which he just mentioned about bringing technologies which can be affordable and considering the pricing and Indian economy, how can we make them affordable? And I think that's what we have done at Shivanka. Some of our products which we are developing in the area of rare disease, our in-house indigenous talent, which Chirag Bhai also mentioned in India, that there is a talent in India. It's just how we can apply and execute, and that is what rightly we have done. And one of the product I think which we have already talked all of you about, it's one of the technology we use making the existing drug better and how that can bring better efficacy, better safety and affordability to the patients. And that is what I think Shivanka as a team we are doing. Another point is how this innovation or how to encourage Indian scientists to take up this area because it's like a very dry area. If you talk about rare disease, it's very complicated. Dr. Shet would agree with me when you talk about genetics. Nobody want to read about it because it is so complex. You have biotechnology, you have molecular biology, pharmacology. So taking up this kind of area even for any masters, PhD students or even in industry becomes a task. Another point is with respect to India-centric, if we talk about participation of Indian patients in clinical trials, it's minuscule. I mean, there are hardly any patients who are participating, so we don't have a data. And if we have to enter into these kind of diseases, then understanding its pathogenesis, developing animal models, all those things are very challenging. So
now what we have been all talking about it is that taking initiatives and how government or funding agencies or institutes are helping or even CDC, SCO to engage Indian companies in the drug discovery and research for rare diseases. And I think I just want to quote an example from say US FDA. I mean we all follow how US is developing the drugs. So in the year 1983, US has passed the act that is Orphan Drug Act, and they were in the same situation what we are today. So 1983 they passed the act, they put a lot of incentives, I think 2.9 million fee as a waiver to the drug developers. So all those things evolved, and now if you see, you go even 2023 US FDA drug approvals, I think 50% of the drugs are from orphan and rare diseases. So I think we are definitely coming up, whether it is a technology, diagnostics, or drugs. And I think that is what our leadership and what Dr. Parva has just highlighted. Even Shivanka being a small team of like 30-35 people, we are keeping that vision. And I think, and then we just started, and we hope that in next 5 years we want to be one of the major innovator in the area of rare diseases. So I will just continue answering the same question that it's a forum where I would love to say that the Indian pharmaceutical industry will walk a few miles, and at the same time the political forum also should walk a few miles. The cost of the medication, as I said, is basically being borne by the patient. So the perspective is, if the research is being made cost effective, which we are committed for not only just for Gaucher, but the other rare diseases also. If there are proper fundings that is available, the cost of the research will not be borne by eventually by the patients. So those sort of arrangement we are also trying to identify with the Indian government, etc. And those resources will really help eventually the patients. Also, when I'm saying the repurposing of the medication, like Gaucher, I would say it is 3 types of type 1, type 2 and type 3. So one is the peripheral aspect of the body, and another is in the brain. Now the problem is the same drug which is there in peripheral can treat into the brain, and the disease can be treated with respect to the neuronal decay if the drug can reach to the brain. So the perspective we are putting up an effort in the direction that it can also penetrate BBB and can treat the Gaucher. So such sort of an avenue from a scientific forum we can put forward to achieve the common goal for the society. Thank you, Dr. Parva, and thank you, Dr. Ganesh, for addressing the question. So Shivanka team will continue this collaboration with different organizations and different institutions with respect to addressing rare disease and towards make in India for rare disease. So let's have a big hand to all the panelists. So we have 5 minutes kind of a time, then the tea will be ready. Thereafter we will be having the ceremony for the awards declaration. Thank you. सर ट्रेड का पैनल बचा है, ये तो इवेंट कंप्लीट होगा नहीं सर, सिर्फ
मेडिकल रह जाएगा, ट्रेड will not be able to give their value adds. So we just need 10 minutes of panel discussion with trade, if possible. No, I have our trade panelist with us. Yeah, if you, yeah. So thank you so much, sir. Thank you. I would like to invite our trade panelists and give them their valuable time here. Thank you. I would like to invite Shri Dinesh Dwivedi ji, Chartered Accountant from Surat. Thank you, sir, for coming from all the way and giving your valuable time. Sir. I would like to invite Shri Mitesh Modi ji, Chartered Accountant from Surat. Thank you, Mitesh bhai, for coming all the way from Surat. I would like to invite, thank you, Mitesh bhai, Shri Deepak Wardlania ji, Secretary, Cloth Manufacturing and Trader Association, C-Mata. Deepak ji, thank you for coming, sir. I would like to invite Shri Dikshit Bhai Shahji from FADA, President for FADA. Dikshit Bhai. Thank you for coming. I would like to invite Shri Amitabh Samanji from MSS Cinema, Multiplex and Single Screen Cinema Association from Rourkela, Odisha. Sir, वो एक मिलेगा मेरे को चैनल आइए। सर माइक ले लीजिएगा विद रेलेवेंस। हिंदी में करें सर, चलेगा हिंदी में? हिंदी में? थैंक यू। सर शिवांकर रिसर्च के माध्यम से जो ये प्लेटफॉर्म आज हमें मिला है और आप अलग अलग फेटर्निटी के अलग अलग इंडस्ट्री के लीडर्स आप लोग ये प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, मैं जानना चाहूँगा सर, जो भारत का हमारा विकसित भारत का प्रोजेक्शन है 2047 का, फेडरेशन का तरफ से $25 ट्रिलियन इकोनॉमी को योगदान देने के लिए अभी मेडिकल रिसर्च के माध्यम से कैसे कैसे इंडस्ट्री में उसका योगदान, उसका फॉलोअप आएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन दीक्षित भाई को है। दीक्षित भाई माइक, जैसे आप ऑटो डीलर, ऑटोमोटिव डीलर एसोसिएशन में हैं, तो ग्रीस और इन सब का बहुत फॉलोअप चलता है, हैवी ऑन है क्या? ऑन चेक करिए। नहीं, ये देखिए, इज द माइक वर्किंग? हाँ ये चल हाँ यस प्लीज। हाँ दीक्षित भाई, तो जैसे ग्रीस का बहुत इंक्लूजन होता है, हैवी प्रोडक्शन, हैवी इंडस्ट्री में पॉल्यूशन का, पॉल्यूटेंट्स का। अभी जैसे कि फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च टीम है, और हम लोग देखते हैं नया नया एडवर्टीजमेंट कि वो इतना स्मूथ कर रहा है, ऐसा कर रहा है। फ्यूचर में अगर ऐसा एक रिसर्च टीम बना के एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो फेडरेशन कितना ओपन रहेगा, मार्केट कितना ओपन रहेगा, इंडस्ट्री कितना ओपन रहेगा हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने में, पॉल्यूशन फ्री बनाने में। क्योंकि उससे क्या है ना कि एक तो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां भी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां भी उसमें वैल्यूएट होंगी, क्योंकि अगर ईवी की भी गाड़ी हुई तो उसमें ब्रेक फ्यूल तो लगेगा ही लगेगा। जरूर। तो आप कुछ शब्द उसके बारे में, अपना जैसे फेटर्निटी है, कैसा उसको, हाउ ओपन द फेटर्निटी विल बी कि ऐसा प्रोडक्ट वैल्यू रहे, और उसका प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शब्द दीक्षित भाई। सही फरमाया आपने, जो सवाल किया वो अच्छी बात है। एक्चुअल में अभी जो पोजीशन पर ग्रीस का जो बता रहे हो ना, वो बहुत ज़रूरी है और हर जगह पर उसकी डिमांड अच्छी रहती है।
और जैसे आप यहाँ कोई ऐसी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कोई बड़ी अच्छी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो इसके मामले में उसमें फुल सपोर्ट रहता है और फुल डिमांडेबल आइटम है। अभी जैसे हर व्हीकल से लेके हर इंजीनियरिंग आइटम में, हर इंडस्ट्री आइटम में, सब जगह पर टोटली यूजफुल आइटम है। तो ये मेरे लिए तो सौभाग्य की बात होगी कि ये सवाल का जवाब बहुत अच्छा पूछा आपने, और इसके लिए मैं 100% पॉजिटिव रिप्लाई दूंगा, और ये अच्छी बात है भाई साहब। तो इससे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है उनको मुनाफा से मतलब होता है मेजरली, लेकिन अगर ऐसा लुब्रिकेंट बने जो उसका पॉल्यूशन ना निकाले और उसमें एब्जॉर्ब कर दे, जैसे वेपर हो जाए, आपने ग्रीस डाला, अगर वो जैसे ही उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी खत्म हुआ तो उसको निकला तो मशीन से, लेकिन उसके बाद वो एनवायरनमेंट फ्री हो जाए या उसका पेस्टिसाइड बन जाए या वो उसमें यूज हो जाए, मतलब जमीन में ही यूज हो जाए बेटर यूटिलिटी के लिए, तो उसको अगर मार्केट और चैनलाइज इधर भारत में करते हैं और भारत से वो प्रोडक्शन बन के वो भारत से एक्सपोर्ट जाता है, तो कितना अपना ग्रोथ एस्पेक्ट बनेगा, फिर अपने को लेना नहीं पड़ेगा क्रूड ऑयल का चाइना से या उधर से किधर से। उसके बारे में थोड़ा दीक्षित भाई थोड़ा अपडेट करें। अभी जो नई सरकार में तो मेक इन इंडिया का जो ट्रेड चला है, उसके हिसाब से देखो तो सब आइटम पहले हमारे ऑटोमोबाइल ट्रेड के अंदर 70% आइटम चाइना से इंपोर्ट होने लगी थी। आज की डेट में ये सिचुएशन है कि यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगा हुआ है, और अहमदाबाद गुजरात इतना डेवलपमेंट एरिया में है कि हर ऑटोमोबाइल्स का ट्रेड यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ गए हैं। आप सब जानते भी होंगे कि यहाँ होंडा, मारुति, टाटा, बहुत सारे व्हीकल्स भी यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो गया है, और साड़न इंडस्ट्री में बहुत अच्छी इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गई है। तो जैसे आपका ये ग्रीस की बात कर रहे हो, आप क्रूड की बात कर रहे हो, तो उसमें तो नेचुरली जब वही सप्लाई की मैन्युफैक्चर भी बहुत सारे बढ़ गए हैं, तो उसमें डिमांड तो आगे जाके बहुत अच्छी क्रिएट होगी, और मेक इन इंडिया तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ इस मामले में कोई भी सपोर्ट की जरूरत होगी तो हम बैठे ही हुए हैं, अहमदाबाद में तो, गुजरात में तो। राइट, थैंक यू दीक्षित भाई समय देने के लिए। मेरा अगला सवाल इसी एनवायरमेंटल के माध्यम से दीपक भाई को है। दीपक भाई जैसे क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड एसोसिएशन से आप जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी भी हैं सीमाटा के, और सीमाटा बहुत फेमस है गुजरात में FFF शो करने के लिए, फैशन शोज करने के लिए, फैशन इंडस्ट्री को लाने के लिए, सारे मैन्युफैक्चरर को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। कल को अपना ऐसा वैल्यू एड प्रोडक्ट बने, मटेरियल बने जो ब्रीदेबल मटेरियल तो हो, लेकिन बॉडी मतलब बॉडी हीलिंग मटेरियल भी हो, तो उस माध्यम से अगर वो ट्रेड इंडस्ट्री आता है, क्योंकि नया लोग जो होता है थोड़ा हिचकाता है, लेकिन अगर फेडरेशन एक सपोर्ट करता है, आपका फेटर्निटी सपोर्ट करता है और बोलता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए भी हम लोग पुश करेंगे ऐसा प्रोडक्ट के लिए कि उसको गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिले, तो मैन्युफैक्चरर को कितना फायदा होगा, और उससे आगे जो घर में डे टू डे यूज का जो फायदा है वो कितना होगा, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या होगा। दीपक भाई, हम लोग अपने सीमाटा के माध्यम से अपने सभी मेंबर को उसकी जानकारी देंगे, प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स उस चीज़ को अपनाएं। हम अपना प्लेटफॉर्म जरूर इस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। थैंक यू दीपक भाई। मेरा अगला सवाल, दीपक भाई कुछ और कहना चाहते हैं सीमाटा के माध्यम से? नहीं, बस थैंक यू। अच्छा, थैंक यू दीपक भाई। मेरा अगला सवाल मोदी जी को है, नितेश मोदी जी। सर, ये स्टार्टअप के जो प्रोडक्शन है और जो अभी नया बजट आया है, उसके बेसिस में सर एक थोड़ा क्विक एनालिसिस और हाउ इंडस्ट्री बेनिफिट विल बी। मोदी जी। थैंक यू आदित्य खन्ना जी, रिस्पेक्टेड डायस एंड द गेस्ट। स्टार्टअप का मैं थोड़ा ओवरऑल जनरल जो है कंसेप्ट वो मैं डिस्कस करूँगा, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप सब जानते हैं कि जनवरी 16 को हम नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करते हैं। ये गवर्नमेंट स्टार्टअप का कंसेप्ट लाई है जी, और इन दी वर्ल्ड वी आर एट दी थर्ड पोजीशन पे आज। राइट। और जस्ट अभी हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अभी डिक्लेयर किया है
कि 1.70 लाख स्टार्टअप्स अभी रजिस्टर हो गए इंडिया में। तो वी आर ग्रोइंग एवरी मंथ। और ये जो मार्च 18 आ रहा है वो स्टार्टअप महाकुंभ दिल्ली में सेलिब्रेट हो रहा है। तो ये माय ओपिनियन, ये गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप को बढ़ावा देके इंडस्ट्री, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट हर एक एंगल से इकोनॉमिक ग्रोथ करने का पूरा प्रोजेक्ट है। विकसित भारत का जो ड्रीम है वो स्टार्टअप के माध्यम से है। अभी स्टार्टअप का जो टैक्सेशन बेनिफिट है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन टैक्सेशन बेनिफिट लेना है तो दैट स्टार्टअप मस्ट बी द एलिजिबल स्टार्टअप यूनिट। व्हाट इज द एलिजिबल स्टार्टअप यूनिट? वो ऐसे सिंपल नहीं कि स्टार्टअप कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो स्टार्टअप में आप आ गए, वो नहीं है। दैट एंटरप्राइज मस्ट बी विद द डेफिनेशन ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप, तभी उनको बेनिफिट मिलता है 3 इयर्स का कॉन्जिक्यूटिव टैक्स हॉलीडे। 10 साल का स्पान है, उसमें से किसी 3 साल में आपको 100% जो प्रॉफिट आएगा उसका आपको टैक्स एग्जेम्पशन है। तो स्टार्टअप की कैटेगरी में कौन आ सकता है? स्टार्टअप में वही एंटरप्राइज आ सकते हैं जो कोई इनोवेटिव। मैंने ये सब्जेक्ट पे बोलने के इसलिए बोला कि यहाँ जो आज का कॉन्फ्रेंस जो है उसका थीम मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा स्टार्टअप की डायरेक्शन में है। इनोवेशन है, कुछ इम्प्रूवमेंट है, कोई नया प्रोसेस है, कोई नया प्रोडक्ट है। आप ऐसा कोई बिजनेस स्केल पे ले जा रहे हो कि जहाँ नया एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो दैट इज विद इन द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइज, फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ दैट स्टार्टअप एंटरप्राइजेस। जनरली कोई किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वो ऐसे कोई बेनिफिट नहीं ले सकता। और एलिजिबल स्टार्टअप बनाने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन देगा, उसके बाद आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक स्टार्टअप सेल बनाया है। वो सेल में वहाँ एप्लीकेशन ऑनलाइन कर ली है और वहाँ एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करेंगे उसको वेरीफाई करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दैट सर्टिफिकेट प्रूव्स दैट यू आर एन एलिजिबल स्टार्टअप एंटरप्राइज। तो ये करने के लिए ऑनलाइन सब प्रोसीजर करनी है, लेकिन जो बिजनेसमैन, जो यूथ है, अभी आपने बजट में देखा होगा ये फुल बजट नहीं है, ये तो जस्ट इंटरिम बजट है, जस्ट टू गेट दी वोट ऑन अकाउंट्स ओनली। तो ये बजट में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये बजट टू गेट दी अप्रूवल सैंक्शन फ्रॉम दी हाउस फॉर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इलेक्शन तक नई सरकार आएगी तब तक जो खर्चा करना है वो खर्चा करने के लिए मंजूरी के लिए बजट प्लेस किया गया। तो आप बजट का अभ्यास करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि सरकार ने बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ह्यूमन कैपिटल पे भी अपना एलोकेशन किया है, और ये एलोकेशन मेजॉरिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टार्टअप्स एंड न्यू बिजनेसेस, वहाँ उनका फोकस जा रहा है। तो ये शॉर्ट में ये है कि भाई जहाँ आपको नया कुछ इनोवेटिव दिखता है और आपकी कोई टीम बनती है तो आप स्टार्टअप में जा सकते हैं। अभी तक जो स्टार्टअप हुए इंडिया में वो मेजॉरिटी वो सर्विस सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, प्रोडक्शन में नहीं है, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है तो पैसा चाहिए, तो फंड कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट ने वो स्टार्टअप सीड स्कीम भी अभी डाली है हमको फंड प्रोवाइड करने के लिए। तो आप चाहे पार्टनरशिप फर्म बनाइए या तो प्रोप्राइटरी बनाइए या तो सोसाइटी बनाइए, आप अगर अंदर एलिजिबल होते हैं तो गवर्नमेंट से आपको फंड भी मिलता है। लेकिन इनोवेशन होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ये इंडिया को ग्रो करने के लिए जो विकसित भारत का जो स्वप्न है उसको फुलफिल करने के लिए स्टार्टअप का कंसेप्ट बहुत हेल्पफुल है। 2014 को जो विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जहाँ तक टैक्स बेनिफिट का सवाल है वहाँ कुछ कंडीशन है, तो वो कंडीशन फुलफिल करने से पूरा बेनिफिट मिलता है। अभी इस बजट में भी 1 साल एक्सटेंड किया है, जो कट ऑफ दी 24 से अभी 25 कर दिए। तो ये स्टार्टअप जो यूथ है वो यूज़ कर सकता है। सर्विस सेक्टर में आपने देखा होगा जोमेटो वाले हैं, योयो है, ये सब सर्विस है, सर्विस ओरिएंटेड एंटरप्राइज। वहाँ बहुत सारे स्टार्टअप आ गए और वहाँ सक्सेस भी है।
तो ये जहाँ इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग के कुछ नया प्रोसेस है, जैसे कि आज है ये रिसर्च है, तो रिसर्च में बहुत कुछ नया हो सकता है, तो उसमें जो कोई टीम बन जाती है तो स्टार्टअप एंटरप्राइज से जा सकते हैं और गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो कुछ भी पॉलिसी है, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू रितेश भाई। आपने बहुत अच्छा बोला रितेश भाई, क्योंकि सीडीटी एमएसएमई में हमारे पास मैक्सिमम एंट्री आता है, और वो बोले कि स्टार्टअप खोलते हैं, 5 लाख का खर्चा है, रजिस्ट्रेशन किया, अब 2.5 करोड़ गवर्नमेंट ने। तो आपने अच्छा बताया कि भैया वो 2.5 करोड़ लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। आई विल कम टू दिनेश भाई। दिनेश जी, जैसे वाटर ट्रीटमेंट और वाटर प्लांटेशन पे बहुत आपने करा है, बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है एज अ सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट ऑल्सो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप हैं ही हैं, लेकिन साथ में वाटर प्योरिटी और जो आप मेरी आपसे जब बात हुई थी उस बारे में, तो मैं कुछ और जानना चाहता हूँ दिनेश भाई आपके माध्यम से ऑन वाटर टेक्नोलॉजी एंड ऑन वाटर प्योरिफिकेशन। वाटर ट्रीटमेंट का तो आपको पता है कि भाई जो वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइकल करना, ट्रीट करने के लिए जो प्लांट बनते हैं। आरओ से रिलेटेड मैं जरूर कहूँगा, बिकॉज जो टुडे सेमिनार है वो हेल्थ से भी रिलेटेड है और रेयर डिसीज से भी रिलेटेड है। तो जो मेरा अपना तजुर्बा रहा है पिछले मोर देन 25 ईयर्स का, खन्ना साहब, I came to Surat in a government organization as a financial accountant in government organization। तो वहाँ जब मैं गया डायरेक्टली फ्रॉम यूपी, तो जनरली जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं या प्लांट है, तो वहाँ पर वो ट्रीटेड पानी देते थे। पानी ट्रीटेड होता है तो उसमें आप ये समझो जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है वो जनरली पीने के लिए सुटेबल नहीं होता है, बिकॉज इट डज नॉट हैव सो मेनी एसेंशियल मिनरल्स। तो मुझे जो फील हुआ कि लगता है इसके पानी में कुछ गड़बड़ है, तो मैं जनरली मैं गांव से रिलेट करता था, तो वहाँ के बंद कर दो, हाँ आप करो, हेलो। तो क्रिप्को हजीरा में इट इज वर्ल्ड बिगेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड इन कोऑपरेटिव सेक्टर प्रोड्यूसिंग यूरिया। तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर गांव था, तो वहाँ के कुएं से मैं पानी 20 लीटर का जो आता है कार्बो उसमें भर के लाता और वो पानी पीता। तो लोग समझते कि यार ये पागल है आदमी, ये पानी वहाँ से ला के और यहाँ का ट्रीटेड क्लीन वाटर है और वो नहीं पीता है। आई रिमेन इन क्रिप्को फॉर अबाउट 6 years और रिजाइंड देयर, और फिर मैं कहीं और गया, तो वहाँ भी हमने देखा जैसे सूरत म्युनिसिपल का है, उससे रिलेटेड है। तो अब कुछ देखो जो भ्रांतियां हमें बात करता हूं कि कई आपके डॉक्टर फैटर्निटी में भी बोलते हैं कि आरओ वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म। तो अब मैं म्युनिसिपैलिटी के पानी पे आता हूं। किसी भी म्युनिसिपैलिटी का पानी जनरली वो गंदा पानी होता है नदी का, वो ट्रीट करके और उसमें जो भी केमिकल डाल करके और लाते हैं और ड्रिंकेबल बनाते हैं। तो क्या उसमें नेचुरल मिनरल्स रहते हैं? वो भले ऐड किए जाते हो बट दे आर नॉट नेचुरल, दे आर मीन्स एडेड आर्टिफिशियल। तो सर हमारे जो ब्रदर इन लॉ ही जो डॉक्टर मेडिसिन, वो जब आए सूरत तो बोलेंगी दिनेश यहाँ पर गैस्ट्राइटिस बहुत होता है, पानी में कुछ प्रॉब्लम है। तो उनको मैंने दिया ही रिजाइड इन यूपी, तो वहाँ उनका एक बड़ा डायग्नोस्टिक लैब है, हमको पानी टेस्ट करो सर वहाँ जाके। इधर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि जो सूरत का म्युनिसिपैलिटी का पानी है इट कंप्लाइज द स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन, जो अमेरिका के हैं उसको कंप्लाई करता है। तो मैं तो बड़े आराम से पानी पीता था कि हम तो अमेरिकन स्टैंडर्ड का पानी पी रहे हैं। जब सर मैंने वो टेस्ट कराया पानी यूपी में लैब में, तो आप माने कि उसमें आयोडीन 10 टाइम्स ज्यादा निकला, पोटेशियम 10 टाइम्स ज्यादा निकला, पीएच लेवल 6.5 से कम निकला। अब ये डे टू डे में म्युनिसिपैलिटी वाले ट्रीट या टेस्ट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होता है वो आप लोग समझ सकते हो कि सोडियम से क्या होता है, हाइपरटेंशन, बीपी, जो ओवरवेट सब होता है। पोटेशियम ज्यादा है तो एक लेथार्जी रहती है, अजीब सा
मीन्स फ्रेश नहीं फील करता, आदमी एसिडिक रहता है। पानी जितना पियो बोले उतना अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, लेकिन अगर पीएच लेवल कम है तो आप पानी पियोगे तो वो क्या रहेगा। एक जगह गया, बोले कि आरो ना पानी लामा गारामा पीवा थी B12 ओछी थवानी शक्यता छे। तो मैंने तुरंत आरो वाले को बोला कि ये क्या नया नाटक है इसका। बोले कि सर ये गलत है, बॉम्बे में 40 साल से आरो का पानी सप्लाइड है बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी से। आई वाज सरप्राइज हाउ द म्युनिसिपैलिटी कैन गिव आरो वाटर टू कॉमन पीपल। ये बात बता रहा हूँ 2012 की सर। 31 को कुछ वहाँ सेलिब्रेशन के लिए कुछ इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बुलाया और मैं गया तो उनका आपका वो म्युनिसिपैलिटी का कौन सा पानी है, और मैं TDS मीटर लेके गया। आई एम सो अवेयर ऑफ अबाउट वाटर। तो बोले कि ये आ रहा है जो चौकड़ी में किचन की उसका, तो सर मैंने TDS नापा, इट वाज 52 TDS। अब वो TDS को वो 52 आरो वाटर था, उसको वो आरो करके पी रहे। उनका बोले मेरा कितना है, तो उनका 7 TDS। कहने का मतलब है कि आरो वाटर, अब हम अरबियन कंट्री की बात करें तो मैं समझता हूं, जहां तक मुझे नॉलेज, कि वो सब आरो करके पीते हैं। जो पानी की इम्प्योरिटीज हैं, आरओ जब से हमने लगाया है घर में, तब से जो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। तो मैं अपना जो बताता हूँ एक्सपीरियंस की, आरओ वाटर इज बेटर देन योर म्युनिसिपैलिटी वाटर, बिकॉज वहां पर वो अनकेयर्ड वाटर होता है। ट्रीटेड वाटर वो भी होता है, नेचुरल वो भी नहीं है, लेकिन आरओ कम से कम सारी जो केमिकल पार्ट है या इम्प्योरिटी सब फिल्टर कर देता है मेम्ब्रेन से। फिर आप पीते हो जो आपको नेचुरल है। ये लेमन में मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट हैविंग एनी डेटा, व्हाट आई एम टेलिंग यू। साइंटिस्ट बैठे तो उनको बोलना। हाँ, तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आपका मिनरल्स है, फल में है, मैं जो समझता हूँ वेजिटेबल्स में है, आप जो ग्रेन्स लेते हैं सब उससे कंबाइंड होता है। तो मेरा ऐसा समझना है कि आरओ वाटर जो हमारे साथ ये बनाते भी हैं आरओ वाटर, और जगह जगह घर में शायद अभी आरओ वाटर ही चल रहा है। तो आरओ वाटर के लिए तो मैं सजेस्ट करता हूँ और मीन्स रिकमेंड करता हूँ कि आरओ वाटर इज बेटर फॉर योर हेल्थ देन योर म्युनिसिपैलिटी। थैंक यू। थैंक यू दिनेश भाई। अभी देखा काला पीना लीना कई पानी आ गए, सेलिब्रिटी काला पानी पी रहे हैं इको करके, तो वो भी आप देखिए, कैंगन, हाँ एल्कलाइन कैंगन। सो थैंक यू सर फॉर दिस टाइम। मैं चाहूँगा कि अमिताभ जी जो मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन सिनेमा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, अमिताभ जी 250 सिनेमा हॉल्स अभी साथ में हैं और देख रहे हैं कि कई मूवीज बनती हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बनती हैं, लेकिन रेयर डिसीज में अगर आप देखें तो सिर्फ आई एम बुद्धा जो है उन्होंने अभी निकाली थी कोविड पे, और वो भी OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से निकल रही है। तो पहले ज़माने में तो आपको भी पता, हमें भी पता है कि वो गांव में जाकर ऐसा ही स्क्रीन लगा देते थे, आधे लोग इधर बैठते थे आधे लोग इधर बैठते थे बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम, और अभी उसी को ओपन थिएटर ऑडियंस बना दिया है और उसका 100 रुपये टिकट चार्ज कर रहे हैं, वो भी पर्ची काट के। तो उसको जो आपने ऐप में लेके आए और नए प्रोड्यूसर्स को जो मार्केट आप ऑडियंस दे रहे हैं, अभी रेयर डिसीज में इसके जैसे रेयर डिसीज का हम अगर थीम बेस्ड मूवी प्रोडक्शन करें, उससे कितना वैल्यू एड बनेगा, कितना अवेयरनेस क्रिएट होगा, उसके माध्यम से मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूंगा। और दूसरी बात ये, जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज में जो नए नए सिंगल स्क्रीन सिनेमाज आप खोल रहे हैं, आपका एसोसिएशन 125-130 सीटर का जो स्क्रीन खोल रहे हैं, तो उसमें आप जो सपोर्ट कर रहे हैं 25 लाख रुपए का, आप भी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दे रहे हैं कि जो पुराने बंद हो गए उनको रिवाइव करें और उनको चेन के माध्यम से आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएं। तो मैं चाहूंगा अमिताभ जी कुछ शब्द उसके बारे में आप बताएं और MSS सिनेमा के बारे में। बस थैंक यू भैया। पहले तो बोलना चाहता हूँ जो आप ओपन थिएटर के बारे में बोले हैं, ओपन थिएटर ऐसा है कि एक स्क्रीन नहीं है, वो एक जैसे कि आप बोले कि पहले ज़माने में होते थे टीवी लगा के दिखाते थे, ये करते थे, उसी टाइप का है। वो एक बड़ा स्क्रीन में दिखा रहे हैं, वो कोई थिएटर के एक्सपीरियंस नहीं देता है।
और दूसरा रहा सिंगल स्क्रीन और टू स्क्रीन का, जैसे आप भी जानते हैं, आप भी जुड़े हुए हैं। सिंगल स्क्रीन टू स्क्रीन, जब तक कोई भी मूवी, आज तक आपको हिस्ट्री मालूम होगा, कोई भी मल्टीप्लेक्स में मूवी चलने से मूवी हिट नहीं होता है। जब तक सिंगल स्क्रीन टू स्क्रीन में नहीं चलेगा वो मूवी कभी भी बड़ा हिट नहीं होता है। और इसीलिए हम लोग आज MSS सिनेमा स्टार्ट किए हैं, जिसका लास्ट मार्च मंथ में एक नेशनल फिल्म फेस्टिवल भी हम लोग करने जा रहे हैं, दिल्ली में होगा। तो इसको हम लोग चाह रहे हैं कि ये सिंगल स्क्रीन टू स्क्रीन ऑल ओवर इंडिया में जो बंद पड़ी है उसको कैसे हमें पुनरुद्धार किया जाए, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हम लोग को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। तो आगे भी आज आके हम लोग चाहेंगे कि इसको हर स्टेट में, खाली CNA जैसे हम लोग उड़ीसा से स्टार्ट किए हैं, अभी हर स्टेट में चालू करेंगे सिंगल स्क्रीन टू स्क्रीन को लेके। और इसमें MSS सिनेमा में भी आदित्य भैया का भी बहुत सहयोग है हमारे साथ में। और इतना करना चाहता हूँ, एक टाइम बाद 2 साल हो या 3 साल में टाइम लगे, समय लगेगा, हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। इस ईयर में हम लोग 5 या 6 जगह में ऑल ओवर इंडिया में हम लोग फिल्म फेस्टिवल करने जा रहे हैं। और हम लोग का कोशिश है कि इस साल कम से कम एटलीस्ट 20 शहर में हम लोग अपना स्क्रीन्स लगाएंगे और उसमें सपोर्ट मिलेंगे। जो स्क्रीन सिंगल स्क्रीन और टू स्क्रीन बंद पड़ा हुआ है उसको कैसे लेके हम लोग खोलें, और कैसे उस एरिया के भी डेवलपमेंट का हो, मुझे कुछ क्या बोलते हैं, जैसे नौकरी भी मिले, और साथ साथ नौकरी के साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है, जैसे आप लोगों को शायद नहीं मालूम है इंटरनल चीज़, जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में लास्ट टाइम भी कुछ ऐसे हुआ था, जैसे आदित्य भी हम लोग उसको सॉल्व किए हैं उसको उड़ीसा में, कि उनका मनमानी भी चलता है। तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में भी हम लोग आएंगे ऑल ओवर इंडिया में, और इसमें साउथ इंडस्ट्री भी हम लोग के साथ में आ रहे हैं। प्लस हम लोग और एक चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, जो रीजनल लैंग्वेज है, चाहे गुजरात हो या उड़ीसा हो या चाहे दिल्ली हो, कहीं का भी UP हो, उसको कैसे उठाया जाए। क्योंकि खाली साउथ मूवी या दिल्ली हो जो या बॉलीवुड मूवी चलने से नहीं होगा, जब तक रीजनल लैंग्वेज के मूवीज ऊपर नहीं आएंगे तब तक कभी भी वो एक फिल्म इंडस्ट्री परफेक्ट इंडस्ट्री नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कितना सहयोग होगा मालूम नहीं, लेकिन आने वाला चाइना में हम लोग इस साल अंत तक कम से कम 20 शहर में जाएंगे, और हम लोग 6 शहर में हम लोग का फिल्म फेस्टिवल इस साल आएगा। और MSS सिनेमा को हम लोग जो बेस्ट करना चाह रहे हैं, हम लोग साथ में बहुत सारे कलीग्स भी जुड़ रहे हैं, अच्छे इंडस्ट्री से भी जुड़ रहे हैं, तो आगे कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू भाई साहब। एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अमिताभ भाई ने बोला कि अगर गुजरात की मूवी गुजराती में एक मूवी बनती है तो सिर्फ गुजराती ऑडियंस के लिए नहीं, वो सब टाइटल में उसको ओड़ई में भी बनाए, उसको बांग्ला में भी बनाए, और उसको भोजपुरी में भी बनाए, और उसको Tier 2 Tier 3 यानी गांव तक जो उधर सिंगल स्क्रीन है, और वो प्रोड्यूसर के साथ कनेक्ट करके प्रोड्यूसर के साथ प्रॉफिट शेयर करे, तो इंडस्ट्री में भी और प्रोड्यूसर आएंगे और नई मूवीज बनेगी, नए लोगों को काम मिलेगा, नया एक्टर बनेगा, और रीजनल सिनेमा का ग्रोथ बढ़ेगा। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इनका एक मार्केट ऑडियंस, स्ट्रॉन्ग मार्केट ऑडियंस है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि तो उसको आप हिंदी में भी आप डब में देखेंगे। तो ऐसा ही अगर जैसे मेरे को अच्छी तरीके से याद है MSS सिनेमा बना क्यों सर, एक सिचुएशन ऐसी थी कि एक चैनल है, मतलब प्रोड्यूसर, मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने मूवी बनाई, मल्टीप्लेक्स को बेच दिया, मल्टीप्लेक्स ने अपने हिसाब से अपना मार्जिन लगा के डाला, लेकिन सिंगल स्क्रीन ओनर का पेन ये है कि उसको मूवी लाने के लिए 5 लाख रुपए एडवांस देना पड़ेगा। मल्टीप्लेक्स के पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास नेशनल चेन है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। तो हमारे पास जितने भी लोग आए, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए, जितने बिजनेस ओनर थे, बोले भाई साहब नेशनल मूवी के लिए तो 5 लाख देते हैं, रीजनल मूवी के लिए 5 लाख कहां से लाए। तो अब रीजनल मूवी इसमें दब गया ना सर, उस स्टेट का मूवी भी दब गया, तो वो बात ही नहीं पहुंची आगे। और मूवी से अच्छा कोई स्टोरी है ही नहीं बताने का, चाहे वो रेयर डिसीज के माध्यम से क्यों ना हो, किसी को अवेयर करने के लिए। आज अगर हम जैसे जयेश भाई जोरदार मूवी बना गुजराती में, उसका वो गुजराती स्क्रिप्ट था, उसको हिंदी में कन्वर्ट करा, अब वो हिंदी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा कल्चर लेवल पे। तो ऐसा करके अगर हम MSS सिनेमा यही करना चाहता है, और इसी के लिए
अमिताभ भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समय दिया। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर आज। जी जी हाँ हाँ दिनेश जी बोलिए सर, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट सर प्लीज। विथ योर ड्यू परमिशन, हमारे साथ जो दो इंडस्ट्रीज आए हैं, शोभ भाई जीरावाला और संतोष प्रजापति जी, तो ये शिवांका और आपके जो RDI हैं इनके लिए इनका एक ऐसा प्रपोजल था, इफ एनी वे दे वांट टू एसोसिएटेड, ये कुछ उसमें प्रोडक्शन में कुछ इंडस्ट्री डाल के कुछ हेल्प कर सकते हैं तो दे आर रेडी। तो इट इज अप टू यू, देयर रिक्वेस्ट इज विथ यू, इफ ऐसा कुछ है तो आप कराइए। एंड थैंक्स टू योर टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए ब्यूटीफुल एंड यूनिक ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सर। मेरा बहुत अच्छा सवाल है सर, एक ही जवाब है, फेडरेशन के मेंबर बनिए, सदस्य बनिए, फैमिली बढ़ाते हैं सर, फैमिली बढ़ेगा धंधा बढ़ेगा जी। थैंक यू सो मच सर। हाँ सिटिंग वाली ना, हाँ यही 5-6 लोग पूरा रहेगा। एक मिनट